जज्बा नहीं बदलता, इमोशंस नहीं बदलते, आंसू का रंग नहीं बदलता, भूख नहीं बदलता, गरीबी नहीं बदलती, अमीरी नहीं बदलता। पिक्चर में वो सारी बातें तो होती है, अमीर गरीब, चोर पुलिस, माँ बाप के, गरीब माँ बाप, अमीर माँ बाप, बच्चों का प्यार, वो सारी चीज़ें कहाँ बदली है। तो कितनी भी चीज़ें बदल जाए मगर जज्बा नहीं बदलेगा और कहानी नहीं बदलेगी। सो वो सस्पेंस पिक्चर बहुत दिन के बाद अच्छी आ रही है, तो एक सस्पेंस पिक्चर के हिसाब से ये ओल्ड क्लासिक सस्पेंस है, मज़ा आएगा। मैं एक एक्टर, ब्लैक एंड वाइट का एक्टर हूँ जो प्रोड्यूसर बन जाता है, जिसे अपनी हीरोइन से बहुत प्यार है, और क्या होता है वो तो आपको देखना चाहिए। मैं कैसे बता दूँ सब कुछ। बहुत खूबसूरत, वो उसी किस्म की एक्ट्रेस हैं जो कि मीना जी के लेवल की लगती हैं मुझे। उनके इमोशंस होते हैं, बहुत प्योर होते हैं, बहुत रियल होते हैं। उनका व्यवहार जूनियर आर्टिस्ट से लेकर प्रोड्यूसर तक एक ही रहता है। उनकी बात कुछ और है, एक क्लासिक ब्यूटी है, और इस फिल्म में, क्लासिक फिल्म के अंदर क्लासिक ब्यूटी का आना बहुत बड़ी बात है। इतना मुश्किल नहीं रहा जितना लगता है। जब मैं सड़क पर देखता हूँ हाथ गाड़ी खींचते हुए औरतें और गरीब बच्चों को, मुझे उनकी ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। मेरी ज़िंदगी तो एक फूल की तरह निकल गई, कुछ कांटों को खेला और कुछ फूलों के साथ खेला, उनकी खुशबू ली, इनसे टोच खाकर खून भी निकाला। तो मतलब ज़िंदगी चलता रहा और खूबसूरत चलता रहा, और आज तक चल रहा और आगे भी चलेगा, कबर तक चलेगा। कहानी इसका हीरो है। कहानी जिस हिसाब से एक मर्डर मिस्ट्री को इन्होंने पिरोया है, वो इसका हीरो है। मर्डर मिस्ट्री, पुराने ज़माने की बातें, पुराना स्टाइल बहुत दिनों के बाद आ रहा है। बस सबको प्यार मोहब्बत, प्रणाम, सबको सलाम, खुश रहो, बस बाकी बिंदास रहो। ऑल द बेस्ट। Well, it is a modern day classic because there's a lot of references to the old Indian cinema. So you get the silent references of silent movies as well as the 1950s and 20s. So that's a very interesting part of the film. Also the costumes, as you'll see, it's all classical, and I think you'll notice once you see the film that the way we act and the way the dialogues have been delivered is very much in tune with the classical way of filmmaking from the old Hindi movies. That you'll have to watch. So it's I think it's a very interesting film, because I think it's interesting that in a day like today you're able to do a lot more experimentation with films, and it's more acceptable. And it's nice that you get a lot of beautiful films coming out these days, but none of them really there's very little who actually gives a lot of references to the old classical films, where you don't have to do a lot of, how do you say, well, that could be, but I wasn't referring to that actually. I think it's nice going back to the basics and keeping the innocence, but still being able to tell a story without having to put too much of confetti around it. And I think that's what I found very beautiful about this film, that you can go back and with references, a bit like the artist, I suppose, that you have the references to old films and you can see the beauty in that. And actually, I think that's. So I played Devika, which is the love interest of Arya Babbar. And again, as it's Chehere, there's a lot of different faces involved, so I think you should watch the film and then you can tell me what is my role about.